Hello students, in today's session I will try to tell you almost everything that is required for JEE as far as kinematics of rotation is concerned. So, in this a bit longish kind of session, I would try to tell you every important aspect of kinematics of rotation. There will be brief theoretical aspects as well as problems as usual. So, let us move on. This is the first important concept that you need to know when you are talking about a rigid body. In a rigid body, the distance between 2 points never changes. The diagram shows the rigid body. Let us assume this is the rigid body. A body is said to be rigid when distance between any 2 points in the body never changes. If the distance between 2 points of a body changes, then it is not a rigid body, it is a flexible body. उसका आप shape बिगाड़ सकते हो, size बिगाड़ सकते हो, बदल सकते हो. But when the body is rigid, distance between 2 points never changes, which means velocity component of some point A along AB will be same as velocity component of point B along AB. Like a body is moving in certain complex fashion, and let us say point A is having a velocity in this direction, whereas point B is having velocity in this direction. Body is moving in some very complex fashion, just like this pen is moving in very complicated way. So, if point A is having a velocity in this direction and point B is having velocity in this direction, then this condition should always hold. What does this condition tell you? Velocity component of A along this line joining A and B is VA cos alpha. VA cos alpha is component of velocity of point A towards B, and similarly VB cos beta is velocity component of point B along the same line AB. So, when velocity component VA cos alpha is equal to VB cos beta, it simply means distance between point A and B will not change. The two points are neither getting separated away from one another, nor they are getting closer to one another. So, these 2 points will stay at constant separation if this condition holds, that velocity component of both the points along the line joining them is same. So, this is very important. This is first important point. Based on this, here is an example. Suppose this is a rigid body, it is a flat rigid body. The question says a flat rigid body is moving in plane of the figure. This body is moving in this plane of the figure at a particular instant. Velocity of its 2 points A and B are as shown. There are 2 points in the body A and B. Velocity of point A is towards B and its magnitude is 10 meter per second. V1 is 10 meter per second, that is velocity of point A, and velocity of point B is in some unknown direction, but its magnitude is given to be 12.5 meter per second. Find the angular speed of the body. Find the angular speed of the body. Length AB is given to be 0.5 meter. Students, if you have any bit of confidence, in fact, you should give a pause to this video and attempt this question. Here I am doing it for you. According to the concept learned just now, if it is a rigid body, then velocity component of this point in this direction, which is 10, velocity of A is entirely towards B, must be same as velocity component of point B in this direction. So, if I call this angle as beta, then V2 cos beta must be equal to V1. I need not resolve V1 because velocity of point A is entirely in the direction of line AB. It is along the line AB. So, when I write V2 cos beta is equal to V1, this is necessary condition for this body to be called a rigid body. What do I get? This 12.5 cos of beta is 10. Now, what do I get? Cos beta is 4 upon 5, right? Cos of beta is 4 upon 5. So, I know that angle.
I know the direction of velocity of point B just by putting this condition that velocity component of A and B along the line joining them must be same. Now, the question asks, what is angular speed of the body? When a body rotates, its angular speed about any point is same basically. Let me remind you that if this is one point A, it can be an independent particle. I am not talking specifically about a rigid body. Let us say this is an independent particle A. With respect to A, mind my language, with respect to A, if another particle B is moving like this, suppose with respect to A, another particle B is moving along this line, will you say that B is rotating about A? No. In this case, B is just moving away from A, radially outward. If B is moving in this direction, will you say that B is rotating about A? Answer is no. It is getting closer to A. It is still moving in radial direction. But what if velocity of B is like this, perpendicular to the line AB? A is a point which may or may not be moving with respect to A. That means when there is an observer sitting on point A, on the particle A, the observer finds that particle B is moving in this particular direction. Will the observer say that point B is getting away from me? Will the observer say that point B is coming closer to me? No, not at all. Because if the velocity happens to be perpendicular to this line, the distance between B and A is not going to change. What this observer will see is that B is rotating about A. Right? Think of circular motion. What happens? With respect to center, this point is having a velocity like this. This velocity is always perpendicular to this line. So, when this velocity is perpendicular to this line, there is only rotation. This point is not moving away from the center or getting closer to the center. Similarly, when observer at A finds that velocity of B is perpendicular to line AB, the observer will say that point B is rotating about me. The point B is rotating about A. And how do we write angular velocity? For writing angular velocity of B about A, we need to know this velocity only. Suppose in a particular case, point B is having a velocity like this. Now, what you will do is, you will resolve this velocity into two components. Velocity component along line joining AB, this velocity component is responsible for moving point B away from A or towards A. But this velocity component of velocity of B perpendicular to this line AB, velocity component of B that is perpendicular to line AB, this velocity is actually responsible for rotation. So, all of you must be knowing that if a particle is rotating in a circle with speed v and radius is r, then angular speed is v upon r. The same thing can be used here. You just need to be mindful of one thing, that the velocity that you are taking here should be velocity component that is perpendicular to AB. If I can call it, let me call this AB as r. So, what I need to find is, what is velocity component of B perpendicular to r? Let me call it as V perpendicular. So, omega is nothing but V perpendicular upon r. So, if there is a question which asks you to find angular velocity of point B with respect to A, you must try to find what is velocity component of B perpendicular to line AB with respect to A. With respect to A, what is velocity component of B that is perpendicular to line AB? Find that velocity, divide it by r. R is separation between A and B. That is angular speed of point B with respect to A. So, in this particular question, come back to this question, we know that this V2 is making some angle beta with line AB, and we have already worked out the value of angle beta, right? Now, the question says, what is angular velocity of the body? It simply means, what is angular velocity of point B with respect to A? When a rigid body is rotating, angular velocity of any point x about any point y is always same.
You can take any pair of point x and y, and angular velocity will always come out to be same. So whether you calculate angular velocity of B with respect to A, or you calculate angular velocity of A with respect to B, it will give you same answer. Or whether you calculate angular velocity of C with respect to A, all are going to be same. So now I am going to calculate what is angular velocity of B with respect to A. So I need to know what is component of velocity of B with respect to A perpendicular to AB. थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक से सुनो. B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में जो AB के परपेंडिकुलर है. This question is not that difficult. A is moving in this direction. तो B की वेलोसिटी रिलेटिव टू A इस डायरेक्शन में क्या होगी? B2 sin बीटा. अगर मैं B की वेलोसिटी के दो टुकड़े करता हूं, cos बीटा और sin बीटा, तो B is having a velocity perpendicular to AB, and that velocity is V2 sin beta. A is not having any velocity in this direction. A is not having any velocity perpendicular to this line. So this V2 sin beta is velocity of B relative to A in direction that is perpendicular to AB. So my angular speed will be V2 sin beta by R. What is R? Distance AB. Now you can work this out because you know V2. V2 is given to be 12.5. Sin beta is known. Cos beta is 4 by 5. So sin beta is 3 by 5. R is separation between A and B, that is also given as 0.5. So many radian per second will be the angular velocity of point B with respect to A. It means this is angular velocity of this rigid body about any point, in fact. Okay, I hope you have understood this. Okay, the next important concept is in pure rotation, the rotation axis remains fixed and all particles of the body go in circle about the fixed axis. When a body is doing pure rotational motion, it simply means there is a fixed axis of rotation and all points in the body are moving in circle about that fixed axis. Like if I say that, sorry, just a minute. If I say that this is a rigid body and it is rotating about this fixed axis, what does it mean? It means that each and every particle in this rigid body is moving on a circular path. All particles are moving on circular path, and centers of all these circles lie on this straight line, and this straight line is known as axis of the rotation. Each particle is going in circle. If you join the centers of all those circles, you will get a straight line which is known as axis of rotation. So when this axis of rotation, this line is fixed, we call it fixed axis rotation. So in pure rotation or fixed axis rotation, it is same thing. The rotation axis remains fixed and all particles of the body go in circle about the fixed axis. Now the angular speed is same for all the particles. When I say angular speed of fan is 2 radian per second, it means each and every particle in the fan is rotating with same angular speed of 2 radian per second, right? Because if this particle completes one rotation in the same interval of time, this one will also complete one rotation. So each and every particle rotates through 2 pi radian angle in same interval of time. Therefore, angular speed is same for all of them. And speed of the particle in general are not same. If this particle is moving in a circle of smaller radius, its speed will be omega into r1. The speed will be smaller. Compared to this particle which is moving in a circle of larger radius, this particle will have a speed which will be equal to omega into r2, where r2 is this distance. So naturally this particle is having higher speed. So farther a particle is from the rotation axis, higher will be its speed. In pure rotation, if the angular speed of the body changes, then we say that there is an angular acceleration. Now if you go and apply some sort of torque, the angular speed of the body will increase. It happens when you put on the switch of the fan in your room. When you put on this switch, the angular speed of the fan goes on increasing for certain period of time. So when the fan's angular speed is increasing, we say that it is accelerated, it is having some angular acceleration. And the angular acceleration denoted by alpha
is nothing but rate of change of angular speed. Its unit will be radian. This is radian per second by second, radian per second square, right? When a body is accelerated, I mean when a body is having some angular acceleration, there is an angular acceleration. In that case, each and every particle in the body is performing non-uniform circular motion. When there is an angular acceleration, means omega is changing, which means the speed of this particular particle or this particular particle is changing, omega is changing. So when a particle is going in a circle and its speed is changing, we say that its motion is non-uniform circular motion, right? And later on in some other video we will study that angular acceleration is caused by something known as torque. Just like force produces acceleration, torque produces angular acceleration. Okay, that is a topic which has to be discussed in some other video actually. Presently we are studying kinematics of rotational motion. Okay, this another important thing which is often useful. In case of a thread passing over a pulley or wrapped on a pulley and not slipping on the pulley, there is a thread which is passing over a pulley and the question says that the thread does not slip on the pulley, or there is a situation when there is a thread and you have wrapped a thread many a times around this thread, around this pulley. The question might also read as thread is tightly wrapped around the pulley. So there is multiple windings around the pulley. In all these cases, when we are saying that thread is not slipping or when we are saying that thread is tightly wrapped, it simply means the thread does not go over the pulley like this. The thread is very tightly holding the pulley, this pulley and this thread. The thread is very tightly holding the pulley and the thread moves only when the pulley moves. There is no slippage. The thread does not slide on the pulley. When so is the case, then V is always equal to omega r. What is V? If this object is coming down with velocity v and this is going up with velocity v, this pulley is rotating with angular speed omega. Now, pulley cannot remain stationary and thread passes over it. Then we cannot say that actually thread is not slipping. When the pulley is stationary and thread is slipping over it, thread is passing over it, then there is clear slippage. Then when there is no slippage, that means the thread moves with the pulley like this. When so is the case, in that case, this V and omega are related as V is equal to omega r, where r is the radius, and it is very straightforward to see actually. It is very straightforward to understand. If this point is having velocity v, then obviously this particle is also having same velocity v. This point, every point on this thread is moving with speed v. So this particular point is also having a speed v, and this point on the thread is having a speed v, and the point on the pulley over here, assuming that pulley is made of some steel, so this is a point on the steel. This point on the steel will also be moving with speed v. So if particle on the thread is moving with speed v, this particular point which is there on the steel of the pulley, it is also moving with speed v. Then only there is no slippage. If these two objects are moving with different speed, then there is slippage. So this particular point on the pulley is also moving with speed v, and obviously you know that this particular point is having a speed of omega into r. So speed of this point, which is omega into r, must be same as speed of all these points. So when there is no slippage, v is equal to omega r. And there might be situations, here also it is true, if it is moving at speed v, this pulley has to rotate and v must be equal to omega r. Okay. Now in this case or in this case, if this body is accelerated, that means this speed is increasing, the angular speed of pulley must also increase. If v is increasing, then omega must also increase, and therefore this relationship holds, right? If v is increasing, the rate at which v is increasing is known as linear acceleration of this body, and when omega is increasing, d omega by dt is known as
angular acceleration of this pulley. So A is equal to R alpha. This relationship will be true, always true in such type of cases, so that there is no slippage. This will ensure that if velocity increases from 1 to 10 meter per second, then value of omega r also increases from 1 to 10 meter per second. Okay, so the next important point. Is any general motion of a rigid body. Any general motion means a rigid body can just translate. When a body is translating means each and every particle on this body is moving with same velocity. A body can just rotate. It is fixed axis rotation. That means each and every particle of the body is going in a circle. The circles will be different for different particles in general, but every particle is going in some sort of circle and the rotation axis remains fixed. This is pure rotation. Now, the general motion means it is a mixture of these two, like this one, like this one. This body is also moving and at the same time it is rotating in some complex way. The motion is very complicated, isn't it? So, this is neither pure translation nor pure rotation. So, all such cases are being referred to as general motion. So, for any general motion of a rigid body can be understood as combination of two motions. This is the most important aspect of kinematics of rotational motion. Any general motion of a rigid body can be understood as combination of two motions. It is translation of center of mass of the body. You have to assume that center of mass is moving, translating, and superimposed with it there is a rotation about center of mass. That means center of mass of the body is traveling and body is rotating about its own center of mass. If you superimpose these two motions, then any general motion of a rigid body can be understood. This is what is being said. So, if with respect to center of mass, suppose there is a point P in a rigid body, this is a rigid body which is moving in some complex fashion, this is center of mass and this is some point P in this body. If there is an observer sitting at the center of mass, in the reference frame of center of mass, the observer will see that point P is moving in circle. In the reference frame of center of mass, the body is rotating, right? So, suppose in reference frame of center of mass, velocity of point P is Vp with respect to center of mass, Vpcm. This is what I have written, Vpcm. It is velocity of point P with respect to center of mass. Now, in the ground reference frame, if somebody is standing here on the ground, he might be seeing that center of mass itself is moving. In the reference frame of center of mass, if there is an observer located at the center of mass of the body, he or she finds that body is rotating. Okay. So, this particular observer finds that velocity of point P at any instant is this much. But the fact is, in the ground reference frame, this gentleman sees that the center of mass itself is translating with some velocity. ये ऑब्जर्वर जो सेंटर ऑफ मास पे बैठा है उसको खुद का मोशन तो दिखेगा नहीं, इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट पी की वेलोसिटी ये है, एंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड द ऑब्जर्वर इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, observer along with the center of mass is moving with this velocity. So, in all such cases, what will be velocity of point P with respect to this man? इस आदमी को इस point P की velocity क्या दिखेगी? आंसर है, you have to add these two velocities. With respect to center of mass, point P की velocity आपको पता है, उसमें center of mass की velocity को आप जोड़ दीजिए, आपको point P की actual velocity with respect to ground मिल गई. Similarly, the same thing is true for acceleration also. If in the reference frame of center of mass, you know the acceleration of point P, this is acceleration of point P in reference frame of center of mass, add the acceleration of center of mass to it and you will get the actual acceleration of point P, that is acceleration of point P in the ground reference frame. Here it is written that a rolling wheel is a typical example where we understand the motion as the rotation of wheel about its center plus translational motion of its center. Rolling wheel एक बहुत ही common typical example है
जहां पे हम मोशन को दो मोशन के सुपरपोजिशन के तौर पे समझते हैं, सेंटर का चलना, सेंटर ऑफ मास का चलना, और व्हील का सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन और सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका रोटेशन, इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया जाए तो हम बॉडी के किसी भी किस्म के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रोलिंग एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, आपके बाइक के व्हील का रोलिंग, वो एक ऐसा डेली लाइफ एक्सपीरियंस है, हम सभी के पास होता है। व्हील का मोशन हम सभी इमेजिन कर सकते हैं। उस मोशन को एक्सप्लेन करने का तरीका होगा कि व्हील का सेंटर ऑफ मास चल रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट में पूरी की पूरी व्हील रोटेट कर रही है। इस बात को अभी जो मैं कह रहा हूं, इसको और फर्दर अच्छे से इलस्ट्रेट करने के लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यूनिफॉर्म स्टिक, देयर इज अ स्टिक रॉड समथिंग लाइक दिस, moving in air has its center of mass moving horizontally at a velocity of 2 meter per second. At the instant one of its end is at rest, find the velocity of the other end. बच्चों वीडियो पॉज कर दो, बच्चों वीडियो पॉज कर दो, खुद से सोचो। देखिए स्टिक कैसे भी मूव कर रही हो, कैसे भी मूव कर रही हो, हम उसके मोशन को समझ सकते हैं सेंटर ऑफ मास का चलना और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना। एक मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि जिस इंस्टेंट की बात यहां पे चल रही है, एट दैट इंस्टेंट स्टिक इज इन दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन। लेट अस अज्यूम फॉर अ मोमेंट, राइट, if there is an observer located at the center of mass of the stick, he or she will see that the whole stick is just rotating like this. It is rotating. The stick is rotating. This is what the observer will see. And for this observer, this particular point will be moving in circle of this radius at speed omega into r. For this particular observer. Now, for an observer standing on ground, how do I get the velocity of this point? For an observer standing on ground, I have to add the velocity of center of mass, I have to add the velocity of this point to this velocity, and the addition must be done vectorially. You need to remember that velocity is a vector quantity. So, this particular center of mass is moving horizontally. The question says that center of mass is moving horizontally. Now, if the center of mass is moving horizontally, and you go and add this velocity of center of mass to this velocity, you add velocity of center of mass to this velocity, then the resultant will be actual velocity of this point. But what does the question say? The stick is moving in such a fashion such that one of its ends is at rest. Now, these two vectors can never make zero. Resultant of such two vectors can never be zero. Resultant of two vectors can be zero in only one way. The two vectors must have same magnitude. They must be having opposite direction. So, if you read the question carefully and think for a moment, you will know that at the instant mentioned in the question, one thing is sure, that the center of mass is moving horizontally and the stick at this instant must be vertical. How do I know this? Again, look at this carefully. In the reference frame of center of mass, if an observer is here, he or she will say that this particular point is having a velocity this way, this particular point is having a velocity this way, and if I call this point as A, then velocity of A with respect to center of mass will be omega into this length. Let me call this length as R, right? With respect to center of mass, velocity of point A is this much. Now, if I add to this vector, if I add these two vectors, velocity of A with respect to center of mass, to that velocity you have to add the velocity of center of mass to get the actual velocity of point A.
So actual velocity of point A will be obtained only if I add this velocity to this velocity, right? सेंटर ऑफ मास में बैठे आदमी को ये रोटेशन दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास में बैठे हुए आदमी को इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर इधर दिख रही है, इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ऐड कर दो तो ग्राउंड पे खड़े आदमी को इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या दिख रही है मिल जाएगा। यहां संभावना बनती है कि पॉइंट ए की वेलोसिटी 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर ठीक उल्टे डायरेक्शन में। इससे मुझे ये समझ में आया कि इस मोमेंट पे स्टिक वर्टिकल है और पॉइंट ए की वेलोसिटी 0 हो सकती है। कैसे 0 होगी? जब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा ओमेगा इंटू आर। ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। तो ये गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो ओमेगा इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज आर? दिस लेंथ। व्हाट इज दैट? at one of its find the velocity of the other end. Length is not given, so I'll just write that. Let us say this length is 2 meter. लिख लीजिए, लिखना भूल गया शायद। A uniform stick is moving in air, has its center of mass moving horizontally at 2 meter per second. At the instant one of its end is at rest, find the velocity of the other end. Okay, I have misunderstood the question. I am so sorry. The question says at this I am so sorry. The question says that at a particular instant velocity of point A is 0, which means this omega into r is exactly equal to VCM, which means this is equal to 2 meter per second. Okay. Now what will be velocity of the other end at this instant? If this stick is rotating like this, in the reference frame of center of mass, the velocity of this particular point B will be omega r. R is this length. Same length. It is a uniform stick, so center of mass is exactly at the geometrical center. तो ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ जो मिली थी वही मिलेगी, but the in reference frame of center of mass point B is having a velocity towards right. To this I will add the velocity of center of mass. So this velocity of point B will become 4 meter per second because I have already calculated that omega r is 2, right? Omega r is 2. So omega r is 2, you add to that velocity of center of mass and you get 4 meter per second. So any complicated motion of a rigid body is always understood as combination of two motions. One, center of mass is translating, center of mass में बैठ जाइए, you will see rotation. You can write velocity of any point using the concept of circular motion, and to that velocity add the velocity of center of mass, do vector addition, and you will get the resultant velocity of any particular point. चलिए, now this is one important point related to rolling motion. When the contact point of a wheel is at rest, a wheel is moving and contact point of the wheel is at rest, that it does not rub the ground, we say that it is rolling without sliding. We also call it perfect rolling or pure rolling. This happens when V is equal to omega r, where V is velocity of the center and omega is the angular speed of the wheel about the center. It is very simple to understand now. Rolling motion of a wheel can be understood as combination of two things. If there is an observer located at center of mass, he or she will see that the whole thing is just spinning, it is rotating. So if you ask this observer located here, if you ask this observer what is velocity of this point, he is going to say omega into r. If you ask this observer what is velocity of this point, every point is rotating in circle, so velocity is tangential. If you ask this observer what is velocity of this point, he or she will say omega into r in this direction. Now with respect to ground, what is velocity of this contact point C? For that I need to add to this velocity the velocity of center of mass. ये center of mass के respect में इस point की velocity omega r है, और अगर ये wheel v velocity से चल रही है, that means wheel का center v velocity से आगे जा रहा है. In that case, this v has to be added to this. So in general, what will be velocity of contact point of this wheel? Let us assume this v is larger than omega r. That vector sum of v right and omega r left will be v minus omega r in this direction.
So the contact point in this case is moving relative to ground. With respect to ground, velocity of contact point is v minus omega r. This means that this object is rubbing the ground. This contact point is moving over the ground. It is sliding on the ground. This is not pure rolling. This is not rolling without sliding. It is rolling with sliding. But what happens if v is equal to omega r? With respect to center of mass, velocity is omega r, and velocity of center of mass itself is same, omega r. V is equal to omega r. When you add those two things, you will get 0. So when v is equal to omega r, in that case, in that particular case, this contact point has no velocity. This happens when v is equal to omega r. In such case, we say that wheel is rolling without sliding. Now, in this particular case, all of you can easily write velocity of this point, isn't it? If this observer is observing this particular point, he or she says that velocity is omega r, which is equal to v. इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v है और इसकी खुद की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में v है. दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2v. इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v है, इसकी v है, इसकी 0 है. अगर प्योर रोलिंग हो रही है, v ओमेगा r के इक्वल है. उस केस में प्योर रोलिंग मतलब ये पॉइंट रब नहीं करता, ये तब होता है जब v ओमेगा r के इक्वल हो. सो ऐसा आप ऐसा सोच के कि सेंटर के अबाउट व्हील रोटेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखना आता है. ओके, इफ द व्हील इज एक्सेलरेटेड देन a इज इक्वल टू r अल्फा मस्ट ऑल्सो बी ट्रू फॉर प्योर रोलिंग टू सस्टेन. हियर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर and alpha is the angular acceleration of the wheel about the center. Question says, if wheel is accelerated for some reason, there is some force being applied and this wheel, okay, it is experiencing an acceleration a. That means velocity of its center is increasing at a rate of a. Now, if the question says that it is pure rolling motion, it is rolling without sliding, then there is a means velocity is going to increase. So, omega should also go on increasing. Then only v will always remain equal to omega r. If v becomes v increases from 1 to 10, then value of omega r should also increase from 1 to 10. Then only pure rolling condition will be maintained. So it means omega should also increase, and omega will increase only if there is an alpha. There is an angular acceleration about center of mass. यहाँ बैठे आदमी को ये चीज घूमती हुई दिखेगी with angular acceleration. कोई भी point नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अल्फा एक एंगुलर एक्सेलरेशन है. जब आप बाइक स्टार्ट करते हो और एक्सेलरेट करते हो, शुरू में जब स्पीड 0, 10, 20, 30, 40 बढ़ रही होती है, तो आपके व्हील की स्पिनिंग स्पीड बढ़ रही होती है. इंजन एक टॉर्क लगा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. ये घूमने की रफ्तार बढ़ रही होती है, ये चलने की रफ्तार भी बढ़ रही होती है. अगर परफेक्ट रोलिंग होनी है तो ए हर वक्त आर अल्फा के इक्वल है. ए को कौन माने ए कौन देता है, वेलोसिटी कौन बढ़ाता है, वो अलग कहानी है, फ्रिक्शन आ जाता है, अलग से देखेंगे. पर अगर ए है तो अल्फा होगा. प्योर रोलिंग को सस्टेन करना है, मेंटेन करना है, और दोनों में रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा. तभी v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल रहेगा. व्हेन v इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस पॉइंट, द कॉन्टैक्ट पॉइंट इज स्लाइडिंग ऑन द ग्राउंड एंड इट इज रोलिंग with sliding. It is also known as impure rolling or imperfect rolling. Okay, let us have a look at this question. A cylinder of radius 5 meter rolls on a horizontal surface. Velocity of its center is 25. Velocity of this center is 25 meter per second. Velocity of point A is, what is velocity of point A? You have to express velocity of point A in component form. I cap J cap notation यूज करके आपको देना है. आंसर x और y एक्सिस मार्क किए हुए. बच्चों वीडियो जरूर पॉज करके ट्राई करो. क्वेश्चन में लिखा है इट इज रोलिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा मैंने जानबूझकर लिखा है यहाँ, रोलिंग रोल्स. जेई मेंस के क्वेश्चन में आप देखेंगे अक्सर वो लिखना भूल जाते हैं, इट इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग. रोल्स मीन्स दे आर एज्यूमिंग दैट इट इज परफेक्ट रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग. Though actually they should write that wheel is rolling without slipping. In JEE advanced question they always do so.
but in many other exams I have found they just ignore it. Rolling means pure rolling for them. I don't know how, but yes, okay. I am here to tell you that it is pure rolling motion which I am talking about. This is pure rolling. So if it is pure rolling, then with respect to center, each and every point is going in circle. This point A is also going in circle. That means velocity of point A with respect to center is omega into r, which is nothing but v. Because it is pure rolling, so velocity of center must be equal to omega r. Then only this point will stay at rest, instantaneous rest. So velocity of point A with respect to center of mass is tangential. It is omega r, which is same as Vc, which is 25 meter per second. Agreed. अब हमें कैसे मिलना है वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? कैसे मिलना है? बहुत सिंपल है. ये सेंटर के रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी जानते हैं 25. अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 25 का वेक्टर एडिशन कर दो. सेंटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखो, उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन कर दो और आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल गई. यहाँ आई कैप जे कैप कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं. ये एंगल 37 डिग्री है, ये भी 37. अगर आप देखोगे ये 53 डिग्री है. तो एक्चुअली मुझे दो वेलोसिटीज जोड़नी है. वन इज 25 आई कैप, है ना, एंड अदर वन इज 25 इन दिस डायरेक्शन. तो इसके कंपोनेंट कर लो. 25 cos 53, if I could recall correctly, is 3/5. So 25 into 3/5 I cap. एक I cap तो ये है 25 I cap, इसका एक कंपोनेंट और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज 25 cos 53 डिग्री J cap. बस बच्चा पार्टी यही आंसर है. सो दिस इज 40 I cap, ये दोनों ऐड कर दीजिए, प्लस 20 J cap. 40I 20J meter per second, of course. So this is our answer. Now the next question is, a wheel of radius r is rolling without sliding on a horizontal surface with its center moving uniformly at a speed v. Find the acceleration of the contact point. Pause the video. Okay, this is the question. It is rolling without sliding, rolling without sliding, and its speed is v, means the speed of center of the wheel is v. Find the acceleration of the contact point. What will be acceleration of this contact point? Now I am not going to directly think like what will be acceleration with respect to an observer on the ground. No, I will always calculate it in two steps. First I will think what happens if there is an observer located at the center of the wheel. सेंटर ऑफ मास पे एक ऑब्जर्वर बैठा है. ये उदास क्यों है भाई, इसको मुस्कुराने दीजिए. हाँ ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे एक ऑब्जर्वर को बैठाइए. इसको क्या दिख रहा है? इसको सिर्फ स्पिन दिख रही है. ओमेगा क्या है? v/r. v इज इक्वल टू ओमेगा r. अगर इस आदमी से आप पूछेंगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है बताइए, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, ठीक है बताइए, तो ये बोलेगा ओमेगा इंटू आर इन दिस डायरेक्शन विच मीन्स v इन दिस डायरेक्शन. ये पॉइंट इनको सर्कल में घूमता हुआ दिख रहा है. आप इनसे पूछेंगे इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो बोलेगा भाई कोई भी चीज सर्कल में घूमे तो एक ही एक्सेलरेशन होता है ना. कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमे तो एक ही एक्सेलरेशन होता है, v²/r या ओमेगा स्क्वायर r टुवर्ड्स द सेंटर. तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है? फिर यहां पे कुछ लिखा है, पढ़िए. द व्हील इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इट सेंटर मूविंग यूनिफॉर्मली एट स्पीड v. जो सेंटर है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. सेंटर का खुद का कोई एक्सेलरेशन नहीं है. इस आदमी का खुद का एक्सेलरेशन 0 है. इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अपवर्ड v²/r है और इसका खुद का एक्सेलरेशन 0 है. हम क्या करते थे, पहले सेंटर के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन लिखा, उसमें सेंटर की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वेक्टर एडिशन करते थे. इस क्वेश्चन में तो इन साहब का मतलब सेंटर का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. तो इसमें क्या ऐड करना है? 0. तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा? v²/r इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, प्लेन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज रोटेशन अबाउट ए सर्टेन एक्सिस
known as instantaneous axis of rotation. Plane motion. Plane motion of a rigid body means well, जैसे ये motion है, each and every particle of this rigid body is moving in one plane. एक पर्टिकुलर पार्टिकल को देख लें तो वो एक खास प्लेन में चल रहा है, ठीक है, दूसरा पार्टिकल दूसरे प्लेन में चल रहा हो सकता है, एक बॉल रोल कर रहा है तो उसके बहुत सारे पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल दूसरे प्लेन में मूव कर रहे हैं। पर अगर मैं राम नाम के पार्टिकल की बात करूं तो राम एक फिक्स प्लेन में मूव कर रहा है, उसका प्लेन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे मोशन को प्लेन मोशन कहा जाता है। जैसे एक ये मेरे पास पानी का बॉटल है, ये रोल कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ये एक फिक्स प्लेन में, इस प्लेन में रोल कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज ऐसे रोल करती हुई ऐसे घूमने भी लगे, ऐसे एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि ये ऐसे रोल करती हुई ऐसे घूम रही है, ये सर्कुलर ट्रैक है जिस पे ऐसे रोल कर रही है, तो वैसे केस में अभी ये पॉइंट इस प्लेन में ऐसे घूम रहा था, थोड़ी देर में बॉटल ऐसे घूम गई, अब ये पॉइंट किसी दूसरे प्लेन में रोल कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसको प्लेन मोशन नहीं कहेंगे। प्लेन मोशन मतलब कोई भी एक पार्टिकल अगर बॉडी में हम देखें तो वो एक ही प्लेन में चल रहा है। ओके, तो एनी प्लेन मोशन कैन बी अंडरस्टूड एज रोटेशन अबाउट अ सर्टेन एक्सिस नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी तक मैंने ये कहा कि भाई रिजिड बॉडी के मोशन को समझना है तो सेंटर ऑफ मास का चलना और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना, ऐसा मन में याद कर लो, कई एग्जाम्पल दिए। अब मैं एक डिफरेंट बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रिजिड बॉडी के प्लेन मोशन को समझने का एक और तरीका है, हम बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हैं, एक ऐसी एक्सिस ढूंढ सकते हैं जिसके अबाउट बॉडी को प्योर रोटेशन में माना जा सकता है। दिस पर्टिकुलर एक्सिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। द पोजीशन, जैसा नाम है इंस्टेंटेनियस, इस इंस्टेंट के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मे इटसेल्फ शिफ्ट विद टाइम। और इसका सबसे आपको बेसिकली मुझे लगता है यही पढ़ना है आपके कोर्स में, यही है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के केस में अगर प्योर रोलिंग हो रही है, माइंड यू v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, इस केस में हम इस पूरी बॉडी को इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में मान सकते हैं। प्योर रोटेशन में मानने का मतलब, अगर ऐसे शेप की कोई बॉडी है, ये इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में, इट सिंपली मीन्स कि इस बॉडी का हर पॉइंट सर्कल में घूम रहा है, सर्कल का सेंटर ये है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, तो इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ रोटेशन से मैं इसको जोड़ दूंगा, ये रेडियस है, इस रेडियस के सर्कल में ये पॉइंट घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होगी, या ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। अगर आप मुझसे इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछेंगे तो मैं इस पॉइंट से इसको जोड़ दूंगा, ये आर है, और इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होगी। So if a body is in pure rotation simply means each and every point is moving in circle. मैं ये कह रहा हूं ये व्हील रोल कर रही है, इसको समझने का एक तरीका था सेंटर का चलना और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना। अब एक दूसरा तरीका है, इसको ऐसा सोचो, ये सिर्फ प्योर रोलिंग के केस में ये जो बात मैं बोल रहा हूं वैलिड है। ऐसा सोचो कि सी के अबाउट ये पूरी व्हील जस्ट प्योर रोटेशन कर रही है। व्हाट डज इट मीन, क्या बोल रहे हो आप? इसका मीनिंग ये है, ये मेरे पास ऐसी कोई चीज है मेरे पास ऐसी कोई चीज है, चलेगा। ये देखिए, इसको देखिए, आप इसको व्हील मान लीजिए एक मिनट के लिए। ये जब ऐसे रोलिंग मोशन कर रहा है तो एक तरीका था कि सेंटर चल रहा है और सेंटर के अबाउट बॉडी घूम रही है, ऐसा सोचिए। एक तरीका यह है कि आप ऐसा सोचिए कि जो पॉइंट ग्राउंड को छू रहा है वो तो रेस्ट में है ही इंस्टेंटेनियसली, प्योर रोलिंग की बात कर रहा हूं। जो पॉइंट ग्राउंड को छू रहा है उसको आप एक मिनट के लिए मन में ऐसे पकड़ लीजिए, भाई इसको होल्ड कर लीजिए, नहीं चल रहा है। अब इस पॉइंट के अबाउट में पूरी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसा सोचिए। जैसे इस पॉइंट के अबाउट में ये रोटेट कर रहा है, जैसे इस पॉइंट के अबाउट में ये पेन रोटेट कर रहा है, वैसे ही आप सोचिए कि ये व्हील जो रोल कर रही थी उसको मन में ऐसा सोचना है कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इसको किसी ने पकड़ लिया और इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी जस्ट लाइक दिस पेन, ये पेन जैसे इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, वैसे ही ये बॉडी भी इस पॉइंट के अबाउट में ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसा सोचिए। ये पॉइंट रेस्ट में है, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। ऐसा सोचेंगे, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो
आपसे मैं पूछूंगा कि भाई आप मुझे बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। आप बोलेंगे कि ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये 2r रेडियस के सर्कल में ये पॉइंट चल रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू 2r। जब प्योर रोलिंग है तो v ओमेगा आर के इक्वल है, ओमेगा आर v के इक्वल है, दैट मीन्स इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v है। जब हम ऐसे सोचते हैं कि सेंटर चल रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी घूम रही है, तो भी इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v मिली थी। और जब हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो भी इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v मिल रही है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर? सो ये पॉइंट इस r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा इंटू rv। तो हम ये सोच के साथ हर पॉइंट की वेलोसिटी लिखें या ये सोच के साथ लिखें, हमें हमेशा सेम मिलता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो हम कहते हैं कि भाई जब बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो एट ए मोमेंट, एट एन इंस्टेंट, हम मन में ऐसा सोच सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट में बॉडी जस्ट रोटेट कर रही है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसलेशन, ये जस्ट रोटेट कर रही है। सो in case of pure rolling, this is instantaneous axis of rotation, this pen is instantaneous axis of rotation। बाकी कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लोकेट करने में थोड़ी परेशानी हो सकता है, बट दिस थ्योरम सेज दैट इफ ए बॉडी इज परफॉर्मिंग प्लेन मोशन देन वी कैन ऑलवेज फाइंड some instantaneous axis of rotation, that means an axis about which the body could be considered to be in pure rotation। Let us have this example to throw more light on this। A meter stick is tossed in air, again a meter stick, that means length of the stick is 1 meter, it is moving like this। At a certain instant the stick is horizontal, किसी instant पे stick horizontal है, and its two end points are having velocity of this 6 and this is 4 in downward direction। Find the position of instantaneous center of rotation। ये देखिए, अगर इस स्टिक के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशन का तो सवाल ही नहीं है। अगर हर पॉइंट की वेलोसिटी 6 होती, अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब कुछ ना कुछ रोटेशन तो है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है ही रोटेशन। अब कैसे समझे इसको समझने के दो तरीके, मोशन को समझने के दो तरीके। पहला अप्रोच, हम सोचें कि सेंटर ऑफ मास चल रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ए स्टिक रोटेट कर रही है। उस अप्रोच से भी हम सेंटर की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्टिक की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक दूसरा अप्रोच है कि हम ये सोचें कि स्टिक का हर पॉइंट इस वक्त किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। प्योर रोटेशनल मोशन है स्टिक का, ऐसा सोचें। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एक पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन है, ऐसा सोचें। तो वो जो पॉइंट है जिसको हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मानेंगे, वो पॉइंट इस केस में कहां है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो भाई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे फिक्स करेंगे, हम इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हम ऐसे सोच रहे हैं कि मान लेते हैं एक पॉइंट है O विच इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। मान लेते हैं वो पॉइंट O यहां पे, 1 मिनट के लिए जस्ट मान लेते हैं। जस्ट वो पॉइंट बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अब अगर ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट A पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो पॉइंट A की वेलोसिटी तो इस लाल लाइन के परपेंडिकुलर इधर होनी चाहिए थी, ऐसा तो है नहीं। जब ऐसा नहीं है, इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि हम ये जो सोच रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन यहां है, नहीं हो सकता। अगर पॉइंट A की वेलोसिटी इधर है तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर किसी लाइन पे कहीं पे होगा, तभी तो। अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, 1 मिनट के लिए मान लें, ये स्टिक ऐसे घूम रहा है, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, तो ठीक है, वेलोसिटी इस आर के परपेंडिकुलर इधर हो सकता है। अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन है और बॉडी ऐसे घूम रही है, हम सोचें, तो भी वेलोसिटी इधर हो सकती है, तो इस लाल लाइन पे कहीं होगी। बी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए रेडियस, दैट मींस बी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ रोटेशन होना चाहिए। ए की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, उसी पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ रोटेशन होना चाहिए। दैट मींस सेंटर ऑफ रोटेशन इसी लाल लाइन पे कहीं होना चाहिए, राइट। अब आप सेंटर ऑफ रोटेशन को अगर सोचते हो कि यहां है, तो ए की वेलोसिटी इधर हो सकती है अगर स्टिक ऐसे रोटेट करे, पर उस केस में बी की वेलोसिटी भी ऊपर होनी चाहिए थी, इसलिए ये पॉइंट ठीक नहीं दिखता। तो आप ऐसे आर्गुमेंट्स करके बहुत आसानी से यहां तक पहुंच सकते हो
समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ रोटेशन O कहीं यहां पे होगा। दैट मीन्स हम इस मोमेंट पे ऐसा सोच रहे हैं कि ये स्टिक इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है, ये स्टिक इस वक्त पॉइंट O के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशन कर रही है। मान लेते हैं यहां से इसकी दूरी x है। What will be VA? VA will be omega into x, and omega into x is VA, which is 6. What is this length? This length is 1 minus x. This is a meter stick, 1 meter length. So if this stick is spinning like this, velocity of point B of course is downward, and its magnitude will be omega into 1 minus x. What is its magnitude? It is 4. You just eliminate omega between these two equations and you will get the value of x. Like you just take the ratio, 1 minus x upon x is 2 by 3. So 3 minus 3x is 2x. So x is equal to 3 by 5, 0.6 meter. Please check once again. So this point is the center of rotation. This stick at this moment is rotating about this point. But the very next moment, the stick is moving in very complicated way. Right now it is horizontal, but after some time it will be like this. At that instant of time, the instantaneous axis of rotation, instantaneous center of rotation will not be the same point, it may be a different point. This point is instantaneous. For this moment it is center of rotation. For next moment, there is another point about which this stick could be assumed to be in pure rotation. So students, I assume that I have completed all the vital points related to kinematics of rotational motion, which you are supposed to know. See you in the next video. Thank you.